Assalamu alaikum, welcome back to Podsquad. Hope you guys are doing well. So, in today's episode, we will be discussing the issue of social media and suicide, how it's linked with it. And we have a very special guest with us, Sir Hassan Zubari, who is the founder of Mensa and PR specialist. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह. So, sir, what do you think of social media? Social media, from since I come from the PR background, पब्लिक रिलेशंस में हम एक मीडिया का एक सेगमेंट है जिसको हम डिजिटल कहते हैं, और उसका एक बहुत ही माइनॉरिटी सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया. बिकॉज डिजिटल इट्स अ न्यू वर्ल्ड आउट देयर नाउ, स्पेशली विद द इमर्जेंस ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़. और तो सोशल मीडिया जो टूल्स हैं, सोशल मीडिया एप्स हैं डिफरेंट, वो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है जिसको हम करते हैं. बट अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस, इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइड ऑफ डिजिटल मीडिया. So, sir, do you think that is social media and suicides are linked in teenagers these days? Linked, देखें जी, social media, as the name says, it has the social side of of any person. जितनी हमारी networking websites हैं, they are again, as the word goes, networking. They are supposed to build up community, society, virtually, of like-minded people. जहाँ भी लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बाज़ दफ़ा कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं. वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक मुकाबले का सिलसिला शुरू हो जाता है. और जो सोसाइटल गैप्स होते हैं, जैसे जहाँ भी सोसाइटी होगी वहाँ डिफरेंट गैप्स होते हैं. वी हैव दी सोशो इकनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं हमारी, उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि मार्केटिंग तक बेस उसके ऊपर कर रही होती है. कि एस सी ए को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या बी को, या सी एंड द लोएस्ट. सो ये गैप्स ऑल्दो ब्लर हो जाती है लाइंस व्हेन यू कनेक्ट विद द नेटवर्किंग ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. बट साथ ही साथ आपका वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, देयर आर न्यू लर्निंग्स. मीन्स यू आर सिटिंग एट वन वर्चुअल रूम वेयर समबडी हैज़ अ बैकग्राउंड जो एक लेट्स से एक मीडियोकर बैकग्राउंड या मिडिल क्लास से आ रहा है. उसके फीलिंग्स, उसके थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू द somebody from the elite class or the rich class. Exactly. तो ये चीज़ें ऑब्वियसली असरअंदाज करती हैं, और जब ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एक जो सबसे नेगेटिव चीज़ सामने आई है सोशल मीडिया की, वो ये है कि इट एलिनेट्स पीपल. लोग अपने अपने साइलोज़ में होते हैं, और वो जब साइलोज़ में होते हैं तो ऑब्वियसली दे कांट शेयर मच with the other people, or if they are sharing it with strangers rather than somebody who can be with them and guide them. तो इससे ये alienation का एक कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसमें जब शेयर नहीं कर पाते तो वो लोड बढ़ता रहता है दिमाग के ऊपर, और एक वक्त आता है डेफिनेटली. आई गेस कंपैरिजन सोशल मीडिया हैज़ डेवलप कि वो एक अपना कंपैरिजन दूसरे से आप कॉम्प्लेक्स फील करते हो. लाइक यू डेवलप दिस इन यू कि अच्छा, इफ़ यू आर सीइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, एनी इन्फ्लुएंसर के दैट पर्सन या लड़का या लड़की वो बैठा है कहीं पे, तो यू फील लाइक ओ माई गॉड, ही इज़ लिविंग हिज बेस्ट लाइफ और शी इज़ लिविंग हर बेस्ट लाइफ. वाई नॉट अस? वाई देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, वी डोंट हैव द सोल्यूशन वाइल दे आर एंजॉइंग. बट वी फॉरगॉट कि वो सिर्फ एक अपना लाइफ का छोटा सा पार्ट दिखा रहे होते हैं अगेन. मगर हम उस छोटे से पार्ट से ही अनफॉर्चुनेटली इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम उस कंटेंट को बहुत ज़्यादा, उस कंटेंट से हम एडिक्टेड हो जाते हैं. आई गेस ये एडिक्शन जैसे जैसे बढ़ती है और ये बहुत नेगेटिवली हमारे नेगेटिव बिहेवियर को लीड करती है. देखिए, इसमें आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं. यस, दे एक्ट, ठीक है, दे एक्ट ऑन सर्टन स्क्रिप्ट. कोई इन्फ्लुएंसर अपनी मर्ज़ी से अपने उसमें नहीं करता. आई एम श्योर आपने देखा होगा कि देयर आर इन्फ्लुएंसर मिल्स विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मिल. इट्स अ फुल फ्लैश बिजनेस इन कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड अदर प्लेसेस. लोगों को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ये अभी से नहीं है, ये अगर हम सोशल मीडिया से पीछे जाए, कन्वेंशनल मीडिया में जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न में वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ मॉडल. उसको मॉडल क्यों कहा जाता है? मीन्स आइडियल, पीपल शुड लुक अप टू देम. तो उसको फिर हमने उनके लिए फिक्स किए कि जी क्या उनके खूबसूरती है तो वो वाइट होगी, तो और ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए. मींस हमने हर चीज़ के अंदर लाइफस्टाइल सेगमेंट्स हमने सेट करना शुरू किया. इफ़ यू टॉक अबाउट दी ड्रामाज, अगर हम कुछ अर्से पहले हम अपने पड़ोसी मुल्क के ड्रामों पे नज़र डालें, या अभी भी मौजूदा ड्रामों में उनके जो साइड है
वो क्या होता है, इंडिया कंपैरेटिवली इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, पोवर्टी रेशियो इज़ वेरी हाई देयर, और इतना ही है कि जो दिस थिंग इज़ अ फैक्ट नॉट अ जोक दैट दे डोंट हैव वॉशरूम्स फॉर एवरीवन देयर. यस यस. ठीक है. सो हैविंग सेड दैट, बट उनके ड्रामे आप उठा के देख लें तो उसमें आपको एक फेरी टेल इन्वायरमेंट मिलता है. आपको एक टिपिकल सेट मिलता है जिसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, विच गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हवेली, बिग हाउसेस. We have Mr. Bajaj or Falana or Dhimkana, and they don't talk less than 400 crore rupees. When you give this message to the common audience, आप उनको you give them एक dream, something to dream about. यही चीज़ें हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ उसके अंदर आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट्स अ सोप प्रोडक्ट, मैं नाम नहीं लेता, बट साबुन की एक प्रोडक्ट है. उनका स्टैंडर्ड हमेशा से था कि जी वो ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल शुड बी द फेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, ब्यूटी सोप. तो जो सबसे टॉप की हीरोइन होती थी इन Yes, गुड I ओल्ड get. डेज, इट यूज्ड टू बी द मूवी हीरोइंस, देन केम द मॉडल्स, देन केम द सिंगर्स, आई मीन द नोन फेस. जो उसको मतलब हिट पे जा रहा होता था, दैट वुड बी द फेस. वही उनका फेस होता था. बाद में वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके व्हेन दे स्टार्टेड टारगेटिंग द मेल सेगमेंट, वहाँ भी उन्होंने यही किया. दे टुक फवाद खान एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, आई मीन टू स्टार्ट विद. सो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ये सब हम सेट करते हैं. बाकी जो लोग हैं फिर आप देखें उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं. इफ़ समबडी इज़, लेट्स से दे डजंट मैच दैट क्राइटेरिया, उनको कॉम्प्लेक्स फील शुरू हो जाता है. दे स्टार्ट, और वो इनर साइड ऑफ योर ब्रेन इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू बिकम कॉन्शियस. और इसकी वजह हम आए दिन देखते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स यू डिप्रेस्ड. आपको ये डिप्रेशन होता है कि जी किस ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली कि आप एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है आपके अंदर. इवन इफ़ यू आर फ्रेंड्स, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर अपीयरेंस एंड ऑल दीज थिंग्स. हम दूर नहीं जाते. हमारे सब चंद सालों पहले हमने यहाँ पे एक हादसा देखा था. उसकी भी वजूहत थी द स्टूडेंट, उसका लास्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया was a very happy face, and she was all dressed in a very vibrant colors, attractive colors, all beauty, all smiles, and the message associated with it was all happiness. But after the incident, when I went through it, I came after that incident. I was just heard about it, but when I just did because I teach crisis communication to kids, and this is something I really wanted to work on, especially the students I was dealing with at the time, who were her batchmates. So That would be very traumatic for them. exactly. So उनको ये चीज़ बताना कि जी we have to take care of others. वहाँ यही था कि the message, when we read that message again with the class, then we felt how alone the person was. So यही वजूहात हैं कि even आप you have thousands of followers, but in real life if you can't share something with your close friends, it's no good. मॉडर्न डे करेंसी, पुराने ज़माने में करेंसी होती थी, बार्टर होता था. आपको नमक आप देते थे तो और चावल ले लेते थे, बार्टर सिस्टम. दैट यूज टू बी द करेंसी. देन केम पेपर करेंसी, कॉइन्स आ गए, गोल्ड आ गया. आज के दौर की करेंसी इज़ लाइक्स, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, एंगेजमेंट. सो आज क्या होता है कि इफ़ यू हैव most of the kids, when I teach them and I see that they are very confused, they say, sir, I only have 300 followers. So I tell them that I have 120. That doesn't make a difference. One of my student, who's a very established, influencer in the circles, in class में मैं पढ़ा रहा था, and he asked me कि सर आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं. मैंने उन्हें बताया जी सब मिला मिलू के 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, रफली अराउंड लेस देन 10,000. उसमें भी रिपीटेशंस हैं. नेक्स्ट थिंग ही सेड वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. I was caught off guard. He was like, sir, मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे आई हैव अराउंड 100,000 फॉलोअर्स, सॉरी 10 million followers, and TikTok पे आई हैव अराउंड, थिंक he started TikTok at that time, 250,000 followers. तो कहता है जी why should I listen to you? I am established influencer. Very good question. But then I realized, and I said, the thing that differentiates us is between it's the quality versus quantity. The few thousand followers that I have, they are themselves top of their fields. They are themselves, you can call them influencers in their respected field. If I put out something, I can reach to millions more than you
within minutes just by targeting specific people. But आपका जो follower है again वो commoner है, because they like, I mean, whatever content you're making, it was interesting very content that he's coming out of the car in a slow motion and there was this Hindu Sidhu Moosewala track behind it, that's it, and 30,000 likes for that. I don't know, people like that stuff maybe, but उसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि where our youth is heading to. For them numbers matters, not the, but coming from the brand side, जब हम ब्रांड्स के पास जाते हैं, येस एट टाइम्स दे आस्क अस नंबर्स के जी 5,000 से कम वाले को आपने नहीं करना एंगेज. हम उनको ये कहते हैं कि जी हमारा असल चीज़ इज़ इन्फ्लुएंसर. यू टेक टॉप इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान जो कि अपनी फील्ड का टॉप है. आई मीन इफ़ आई नेम अ फ्यू, वसीम अकरम इज़ है, वी गॉट सानिया सईद, यू नो, बेस्ट इन हर फील्ड, नादिया जमील बेस्ट इन हर फील्ड. बट इफ़ यू लुक एट दिस सोशल मीडिया फॉलोइंग, ऑब्वियसली दे हैव अ लिमिटेड फॉलोइंग. दे हैव लिमिटेड फॉलोइंग बिकॉज आपके ऑप्शन बढ़ जाता है. तो क्या हम उन्हें इन्फ्लुएंसर मानेंगे या नहीं मानेंगे? I feel like it just is social, as you name few of them. One of them, I know them very personally because my family is connected with them. So the thing is that I have personally seen how their family is alone, how their parents are alone. So I feel like कि जैसे कहते हैं ना तन्हाई का शिकार एक वो आती है, तो I have personally seeing this कि how they face it. So I guess social media is not everything. Followers doesn't matter, engagement doesn't matter. The thing is ke what you are originally, you should put yourself out, you should speak your mind rather than thinking ke okay, if I'm posting this I will get the likes. I guess originality खत्म हो चुकी है हमारे spending अंदर. more time on pretending. Exactly. ठीक है, they are spending more, they are pretending to be somebody else, not. और यही चीज़ हमने देखी है इवन हमारे, अगर हम देख लें एट टाइम्स समबडी पर्सन हु मेक्स नॉइस एंड क्रिएट अ न्यूज़. फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस आयशा अकरम केस जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ. तो ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट फेम, शी वाज अ नर्स इन सम हॉस्पिटल, ऑब्वियसली शी हैज़ ज़ीरो मीडिया सेंस, शी डिड अ स्टंट, अदालत में गया, अभी कहाँ है जी, वो मिडल ईस्ट में बैठी है. देन वी हैव अदर पीपल जिनका they have a nuisance value, not the actual value. I mean somebody like अगर आजकल political scenario में बात करूँ, हरीम शाह, Yes. out of nowhere, या if I compare her with Kandil Baloch which started this thing, Kandil still has her originality. Exactly. She was comparatively she was innocent. I mean if I compare both these names, और उसका इसी वजह से उसका डायरेक्शन बिल्कुल अलग थी. जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि दे कम आउट विथ सो मच कॉन्फिडेंस एंड दैट इवन इफ दे आर पुटिंग समथिंग आउट, एक झूठ भी वो लेके आ रही हैं सामने, तो देयर इज़ अ फॉलोइंग जो उसको यकीन करने बैठ जाती है. पाकिस्तानियों ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत गलत तरीके से यूज़ किया है. हाँ, बाहर मतलब डिफरेंट कंट्रीज दे यूज़ इट इन अ वेरी यूजफुल वे. अगर वो सोशल मीडिया को यूज़ करें, दे प्रमोट गुड थिंग्स. नहीं, इट्स मैं अभी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ हो, इसलिए कि देखिए हम फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोअर्स, वी आर नॉट ट्रेंड सेटर्स. हम देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, हम वही चीज़ करते हैं. अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस भी, हमारी मीडिया का भी यही हाल है. हमारी जो लो पब्लिक है इस वक्त, वो बहुत सेलेक्टिव है अच्छी खबर सुनने के मामले में. सबका गुड न्यूज़ का जो एंगल है वो डिफरेंट है. मे बी आप एक गुड न्यूज़ सुनना चाहेंगी क्रिकेट फैशन के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से फॉर एग्जांपल, बट हॉकी माइट नॉट बी समथिंग गुड फॉर यू. आई मीन जस्ट द अदर डे Pakistan junior hockey team reached the semi-finals of which comparatively is an achievement because hockey से Pakistan out है बिल्कुल, supposedly our national game. But उसको अगर मैं कंपेयर करूँ कि एक आपकी ग्रीन ब्लेजर्स वाले पहनने वाले बच्चे सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं टूर्नामेंट के, कहीं भी आपको शायद सुनने को मिलेगा भी नहीं, पता भी नहीं होगा. ये भी पता है किसने. टॉकिंग अबाउट कि हम उस कंटेंट को नहीं करते, हम मीम्स की तरफ चले जाते हैं. हम ऐसे कोई चीज़ आई है, वी विल जस्ट पिक अप द नेगेटिव पार्ट एंड वी विल मेक अ मीम ऑफ इट एंड इट विल स्प्रेड ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर. आई गेस एज अ टीन एजर जो कि हम आई लुक माई सेल्फ 4 years back before entering the university, what was our thought process यही था, what was our friendship, और उसमें यही सिखाया जाता था, देखा भी जाता था टीचर्स भी कि अच्छा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ा ज़रूरी फैक्टर समझा जाता था. आई फील लाइक कि इट गिव द एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट एज वेल. देखिए इसमें when we are creating content, it's called content creation now.
anybody can create a content. We have seen celebrities which were nobodies just few years back. Talking of Junaid Akram, uh, he started his generic talk. People like the way he talks because he talks with एक फ्लुएंसी के साथ बोल रहा होता है और मोस्टली उसकी चीज़ें होती हैं कि वो सोल्यूशन बता रहा होता है लोगों को. ही गॉट द फॉलोइंग. ऑन द अदर हैंड वी हैड other content creators like Zaid Ali T or या रहीम परदेसी. वो They जी have grown so much through it. सो एग्जैक्टली दानानीर एक एग्जाम्पल है. आई मीन एक तरफ आयशा अकरम की आपको एग्जाम्पल दी, दूसरी दानानीर की एग्जाम्पल है. दे वर born out of opportunity. I mean, all of a sudden. They all needed the opportunity and they get the hype of. बट दानानीर ने अपने आप को जिस तरह किया है कि शी एंडेड अप एक्चुअली इनटू द इंडस्ट्री. ठीक है, नॉट एवरीबडी इज दैट लकी. इफ यू रिमेंबर सम टाइम्स बैक, वन पाउंड फिश, देयर वाज अ सॉन्ग दैट केम फ्रॉम यूके जो यूरोपियन चार्ट्स पे नंबर 2 पे गया था, which is, I mean, it's a big achievement with the likes of Michael Jackson and others. But उनके साथ क्या हुआ जी, he came to Pakistan. Today nobody even knows where he is. वो लास्ट मैंने सर्च किया था, आई थिंक वॉज इन नेटिव सिटी सरगोधा आई गेस. वहाँ पे कोई बस डिपो चला रहा है वो अपना. सो आई मीन एट टाइम्स यू गेट द अपॉर्चुनिटी, यू बिकम फेमस. बहुत से लोग उसको नहीं मैनेज कर पाते. मैनेजमेंट इज़ द की. वो गिड़वी बजाने वाली वो बच्चियाँ थी जो जस्टिन बेबीज जिनको निकनेम दिया गया था. यू सी देम, दे रीच कोक स्टूडियो. सो इट ऑल डिपेंड्स कि बाज जो एकदम से शुरू हुए या द लेटेस्ट सेंसेशन वाज दिस गिल जो बची थी, शे गिल. शी स्टार्टेड, उसकी एक वीडियो वायरल होती है कि अपने वो कोविड के दिनों में वो बैठ के गुनगुना रही है और वो वायरल होती है ना. शी एंडेड अप विद द बिगेस्ट हिट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड. सो इसमें सबसे बड़ी होती है इफ़ यू हैड गॉट द प्रॉपर गाइडेंस. एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ ये हो गई, एज आई सेड, प्रिटेंडिंग. जो आपने बात कही, हम अपने आप को जैसे हम वैसे रखें और उसमें अगर हम अपने आगे बढ़ें. अब लोग उसमें होता है कि अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जी अगर मैं जैसा हूँ वैसा तो मुझे मिल नहीं रहा. आई हैड टू बिकम समथिंग टू बिकम फेमस. फेम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाते. दे एंडेड अप अगेन. और वही बात है, यही चीज़ें एलिनेट कर रही होती हैं कि एवरी डे यू एंड अप कंपेयरिंग योर सेल्फ. वेस्टर्न सोसाइटी की मैं बात करूँ, मिडल ईस्ट की बात करूँ, दुबई का, देयर वाज सम फेमस केसेस of top celebrities turn out to be fake. They were turn out to be pretenders. I mean, somebody coming out, Andrew Tate की example हमारे सामने है कि जी he later became a joke. So it all depends कि social media का इस्तेमाल कैसा है. वो उसके इस्तेमाल क्या है कि it comes out of society. So sir, what strategies we should adopt for avoiding the suicidal behavior which is caused by social media? जी, as it is, as the name says itself, सोशल मीडिया. सोसाइटी के अंदर कौन से मीडियम्स होते हैं? आमतौर पे हम सोसाइटी के अंदर ये होता है कि हम एक दूसरे की खैर खबर रखते हैं. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज़, इट्स पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस वैल्यूज़. एवरी रिलीजन इन द रीजन के लव थाई नेबर, जो 10 कमांडमेंट्स में से लेके अपना पड़ोसियों के हुकूक अगर हम अपने उसमें आ जाएँ. सो नेबरहुड, और neighborhood means in your good vicinity or good 40 houses near within your reach. सबका ख्याल खबर गिरी रखना. I mean, एक you should know if there is a problem in your neighbor's house, at least there should be a way. और ये मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ. If I just take you back during my time, I remember it. हम स्कूल से आते थे और अगर हमें हमारे घर में कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, वी यूज्ड टू सिंपली रिंग बेल ऑफ आवर नेबर्स एंड यूज्ड टू वॉक इनटू देयर हाउस. आई फील लाइक कि सोसाइटीज़ से ज़्यादा ये चीज़ ना अभी जो दूसरे एरियाज हैं सच एज थोड़ी सी कहते हैं ना अंदरून टाइप एरियाज, वहाँ पे अभी भी है. सो आई पर्टिकुलरली लिव समवेयर जहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें हैं. तो अ नेबर ऑफ आवर, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट बाय हरसेल्फ, बट शी अटेम्प्टेड सुसाइड. The reason was she was lonely. Her husband died. He has a son who went to university. तो वो उसको भी इतना नहीं होता. One day he came back and she was laying on her bed or she drank the acid. She was when जब उनका सब हुआ तो she was like I was so alone कि I don't know what to do. I feel like this is the escape. एग्जैक्टली वो यही चीज़ है. और इसमें देखें सोशल मीडिया जो है ये अगेन एज ए सेड साइलोज बना रहा है.
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट इंडिविजुअल बेस पे कम से कम, मैं नहीं कहता पूरी दुनिया की खबर आप रखें, बट कम से कम 4-5 लोग जो आपके क्लोज लिंक के अंदर हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, आपके कुछ कजन्स हो गए, आपके एल्डर्स हो गए। अभी जो आपने केस दिया, जस्ट इमेजिन दिस केस दैट उनका बेटा मौजूद है और स्टिल शी इज़ फीलिंग लोनली। सो हमें सेल फोन का टाइम होता है। दिस इज़ समथिंग आई टीच टू माई स्टूडेंट्स एज वेल, कि क्लास के दरमियान अगर बैठे हैं and if your teacher is talking to you and you're busy on your phone, that's Very show the sign of disrespectful. disrespectful. Yeah, Exactly. I mean उनको शायद फील ना होता, बट एज अ टीचर हमें हो रहा होता है कि somebody is not interested in my class. Likewise, if you are sitting with your parents, you should put your phone down. ठीक है, I still sit with my father. When I sit my father, I make sure I put my phone upside down और बंद करके उसका वॉल्यूम, so that I can, उनको ये फील भी ना आए कि मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है इस पर का। ठीक है, बीइंग द सन, ये हमारी लाइकवाइज आई टीच द सेम थिंग टू माई चिल्ड्रन कि इफ आई योर फादर, सी यू आर सिटिंग विद योर फादर, यू आर शोइंग मी समथिंग, दैट्स फाइन। बट आज क्या हो गया, आप एक डाइनिंग टेबल पे ही बैठे होते हैं, हर आदमी के हाथ में अपना फ़ोन होता है। सो वी हैव सेट अप सम रूल्स एट होम कि जी हम अपने सेल फोन जो हैं खाने के टाइम पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। साइकोलॉजिकली भी ऑल्सो, आई मीन आई वाज जस्ट द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू वन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी चीज़ बताई कि आप अगर आपका दिमाग कहीं और आप खाना खा रहे होते हैं तो उसका असर नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि आप अपना, बिकॉज द इमोशंस वी आर गेटिंग फॉर वट एवर वी आर रीडिंग और वॉचिंग, उसका इमोशंस मेरे उसमें We are हावी हो apparently जाते हैं। eating them. एग्जैक्टली। सो इफ यू The thing I like about my household is that when we are on the table, our father takeaways our phone. Perfect. I'm like 23, but still at 12 he will come to my room and he will give your phone to me. But because just he's not कि वो किसी चीज़ के बारे में suspicious and stuff like that, he's just like give you some rest. सारा दिन यूनिवर्सिटी के बाद बिल्कुल। you need the time, stop the phone, put it and go to sleep. I'm glad to hear that this is good parenting because he cares about you. He cares about you as a parent. And as a parent myself, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनके बहुत असरात हैं। तो at times we had to teach our kids। देखें, हम में गुजर चुके हैं, एज आई सेड हमारी जनरेशन ने देखा है चेंज। Yes. हमारी जनरेशन ने बहुत चीज़ें फील की। आप लोग की जनरेशन है, यू आर बॉर्न इनटू दिस। Yes. सो आप लोगों के लिए इट्स नॉट फॉर अस, इट्स अ मिरेकल। आई मीन यू नो, टाइपराइटर के दौर से कंप्यूटर और फ़ोन, सेल फोन, व्हाट्सएप तक आना, Yes, yes. it's a long journey. So we know the consequences as well because we were part of that experiment. You have been through this. Yeah. Sir, it was such a So, great conversation with you. Thank you so likewise, much for ji. coming. I hope every one of you learned something through this podcast, and the message we are trying to convey is that be yourself. Try to convey yourself as a person on social media, ना कि what others थे जो सोचते हैं उस चीज़ पे based होके. I hope this helped you. Thank you so much. Bye. I'll take next time. Thank you, ji.